All right, here's some big reaction coming in on Farooq Abdullah's statement asking to ban Kashmir Files, claiming that Kashmir Files is the reason for increased terror activities in Kashmir. Shiv Sena now partially condemning Farooq Abdullah's statement and partially endorsing it. In fact, Shiv Sena chief Manish Sahni says that Farooq Abdullah has given an irresponsible statement. Having said that, it is also true that terror incidents have increased after the release of Kashmir Files. Holding only the movie responsible for terror is not right, but yes, atmosphere has been vitiated due to this film. This is exactly the words of Shiv Sena chief Manish Sahni. BJP Congress and victim of kin slamming Farooq Abdullah owing to the statement that Farooq Abdullah has made. Now you have Shiv Sena wading into this controversial statement. Shiv Sena chief Manish Sahni has said Farooq Abdullah blaming the film entirely for increased terror activities is not right. But yes, it is true that post the release of the film Kashmir Files, there have been increased incidents of terror activities, terror incidents. But holding the movie alone responsible for terror is not right. But yes, atmosphere has vitiated due to this film across the country. This is Shiv Sena chief Manish Sahni who says, following up on Farooq Abdullah's statement, Farooq Abdullah had slammed the killings of Kashmiri Pandits but blamed the film Kashmir Files for increased aggression and crimes by Muslim youth in Kashmir. Let me quickly cut across to Sunil G. Bhatt, joining us live for more on that. Sunil, the Shiv Sena also now wanting to comment on Farooq Abdullah's statement has said that what Farooq Abdullah said was irresponsible and that you can't blame a certain particular film for increased terror activities. But he does claim that it is true that post the release of the film, there have been more instances of terror that's been reported. And yes, atmosphere has been vitiated due to this film. This is what Shiv Sena chief says. Your take on that? Well, Bila, we understand that politics has intensified over the issue of Kashmiri Pandits and as well as the killings that are taking place in the Kashmir Valley. But the fact remains that the Kashmiri Pandits are being targeted right since late 80s, and it is not just that after the release of the movie, Kashmiri Pandits have been targeted. So it's quite bizarre to say that, one movie has created this atmosphere where killings are taking place. A movie was released this year, but before March 2022, were killings not taking place in the Kashmir Valley? Did Marg massacre did not take place? Did Sangrampura massacre did not take place? Did other massacres taken place in the Kashmir Valley? Release of the movie. So killings have been taking place in the Kashmir Valley for a long time, and in the recent past also, if we see, it was Rakesh Pandita, Ajay Pandita, the grassroots level democracy workers who are working in the Kashmir Valley, they were targeted. So we understand Shiv Sena, after they parted ways with the BJP, they have taken different stance on certain issues. Because this movie was endorsed by none other than Prime Minister Narendra Modi. That is why Shiv Sena took a very, different stand, and it slammed the government for endorsing the movie, and it asked government to do something for the Kashmiri Pandits instead of just, endorsing the movie. So there is, the political fight and the political rivalry between Shiv Sena and BJP, and that is coming in way of in this particular issue also. So the political parties are, busy, busy blaming each other, but at a time when they should be joining hands and, seeking, they should be helping the Kashmiri Pandits to get justice. They are blaming each other, taking shots at each other. And ultimately, it's the people, the victims of terror who are suffering, and there is no light at the end of the tunnel, and justice seems to be, a distant dream for the Kashmiri Pandits. Sunil, thank you very much for joining us with those details. Now, of course, prayers going out to those Kashmiri Pandits who currently are so fearful of their existence in the Kashmir Valley. The controversial film Kashmir Files, directed by Vivek Agnihotri, is again in the eye of the storm now. Former Minister, Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah has stoked a massive controversy by claiming that if the government wanted to save Kashmir and Kashmiri Pandits, the film should be banned. He further claimed that the atmosphere of hatred against Muslims in India is the cause of anger against Muslim youth in Kashmir Valley. The film, which released on March 11th, sparked a massive debate among political parties. Makers of the film have also been accused of playing fast and loose with facts and portraying a villainized image of Indian Muslims.
ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। अगर आपने हिंदुस्तान को बचाना है तभी कश्मीर बचेगा। बेतर्क बिना किसी लॉजिक के इस प्रकार का बयान देना ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि आप इन हत्याओं की सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। क्या उसके लिए मापदंड अपनाए जाने चाहिए? ये सरकार सोचेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सोचेगी, लेकिन इस बयानों से ये साफ बू आती है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा देखते नहीं थे, वो हमें आके मिलते थे, हमारे फंक्शनों में बैठते थे, लेकिन जब वोट डालने की बात आ रही थी, वोट हम आपको नहीं देंगे। हम जब जाते थे जब उनके कैंपों में, बाकी जगहों में, वो सीधा कहते थे ना, ठीक है हम आपसे मिले, 2-4 बातें भी हुई, लेकिन वोट हम आपको नहीं देंगे। वोट हमारा मोदी जी को जाएगा, वोट हमारा बीजेपी को जाएगा। क्या हाल हुआ उनका ना? एक बेचारा नौजवान जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत काम करने गया, चालूरा में तहसीलदार के दफ्तर में काम कर रहा था, दफ्तर में घुस के उसको गोली मार के उसको खत्म किया। और जो उसमें अपने गम का, अपने अफसोस का इजहार करना चाहते थे, हुकूमत से जवाब हासिल करना चाहते थे, उनका क्या हाल हुआ? टीयर गैस, लाठी चार्ज, पता नहीं कितनों को अस्पताल में, उनके घरों के बाहर ट्रकें लगाई, जो कल तो सिर्फ हमारे साथ हो रहा था। Right now, Shiv Sena endorses Farooq on Kashmir Files. Jammu and Kashmir former Chief Minister Farooq Abdullah has said that the film Kashmir Files should be banned. Post the film, terror activities have increased. Now, Shiv Sena's chief Manish Sahni has said Farooq Abdullah, blaming the film entirely for terrorism is irresponsible. Having said that, it is true that terror incidents have increased after the release of film Kashmir Files. Holding only the movie responsible for terror is not right, but yes, atmosphere has been vitiated due to this film. This is the exact statement coming from the Shiv Sena chief Manish Sahni, who blames the film Kashmir Files of increased incidents of violence in the country. Let me नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका एक अभी जो है बड़ा ही गैर जिम्मेदार जो है एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस समय जो कश्मीर घाटी में माहौल है और जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इसका कारण कश्मीर फाइल्स फिल्म है। इस फिल्म को बैन कर दीजिए और हत्याएं रुक जाएंगी। देखिए, कश्मीर फाइल फिल्म को छोड़कर बहुत कुछ है जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की ज़रूरत है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। लगातार 5 अगस्त 2019 से जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का दावा करते थे, उस दावे को ज़मीनी तौर पर सच्चाई साबित करने की ज़रूरत है। हाँ, कहीं ना कहीं जो कश्मीर फाइल है उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है इन हत्याओं को लेकर। लेकिन मनीष जी, जख्मों को खरोदा गया है। लेकिन मनीष जी, कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने से पहले भी तो इतनी सारी हत्याएं हुई, तो उनके लिए कौन सी फिल्म जिम्मेदार थी? तो आपको नहीं लगता कि फिल्म पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? फिल्म कहीं ना कहीं हमने कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक फिल्म भी जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि वो पुराने जख्मों को फिर दोबारा से खुरेदा गया है जो नहीं होना चाहिए था। उसके साथ लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो लगातार वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकना होगा। कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। हमारे यहाँ पर अमरनाथ
यात्रा भी हाल ही के अंदर शुरू होने जा रही है 30 जून से। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी धमकियां दी गई हैं। तो सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को सचेत होने की जरूरत है ताकि यात्रियों पर इस तरह के हमले रुक सकें। जो फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया है उसकी हम आलोचना करते हैं कि खाली कश्मीर फाइल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बहुत से और भी तथ्य हैं जो जिम्मेदार हैं। लेकिन आप मानते हैं कि कश्मीर फाइल भी जिम्मेदार है? देखिए, कहीं ना कहीं आपने उन जख्मों को खरीदा है जो 30 साल से लोग उन जख्मों को भुला चुके थे। उन जख्मों को खरीदना भी एक तरह का, और कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी वो भी। न्याय तो मिला नहीं ना समुदाय को, तो अपने अधिकारों की बात तो करना ठीक। देखिए, सरकार न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि 30 सालों के अंदर जितनी केंद्र और राज्य के अंदर सरकारें आई हैं, किसी ने भी कश्मीरियों का हाथ नहीं पकड़ा, उनको मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। पिछले 7 सालों से भी लगातार मोदी सरकार वहां पर दावे कर रही है, मगर जमीनी तौर पर कश्मीरी लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया वहां। तो इस समय जो वर्तमान स्थिति है कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति, या अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की भी स्थिति देखें, कश्मीर घाटी में हत्याएं हो रही हैं अल्पसंख्यक समाज, हिंदू समाज की। और यहाँ हमने देखा कटरा में भी हमने देखा कि किस प्रकार एक बस में शुरुआत में पता लगता है आग लगी और अब आतंकी एंगल माना जा रहा है उसमें है। और अब अमरनाथ यात्रा भी है, आतंक के बादल मंडरा रहे हैं। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है कि जिस इस समय जो स्थिति जम्मू कश्मीर की काफ़ी नाजुक हो गई? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं, हमारे देश की केंद्र सरकार जिम्मेदार है जो लगातार दावा करती है कि कश्मीर के अंदर अमन बहाली होगी। आज हम यहाँ पर जो हाल ही के अंदर गत वीरवार को जो कटरा बस स्टैंड के बस